और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके अनुभव के बारे में जाने, और कहीं ना कहीं वो अपने कैरियर के लिए भी, अपने गोल के लिए भी उस तरह से प्रिपेयर हो पाए, अपना एक टारगेट सेट कर पाए और अपनी एक सक्सेसफुल जर्नी को जो है आगे कंटिन्यू बढ़ा पाए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्त कि एपीएलएल आज लास्ट 20 ईयर से जिस विजन के साथ, जिस मोटो के साथ वर्क करना स्टार्ट किया है, वो हमारा एक ही मोटो है, एक ही विजन है कि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन से इस भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करना है। क्योंकि हमारा यही मानना है कि जो हुनर पे आधारित जो शिक्षा होती है, उसी के सहारे कोई भी विद्यार्थी अपना एक सुपर कैरियर जो है बना सकता है। उसी दिशा में इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स इस कंपनी ने लास्ट 8 मंथ इस लॉकडाउन सिनेरियो में हमने लिया है और अभी अब तक ये कंटिन्यू है। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सर का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं, आप सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह से एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि सर अपने बेशकीमती समयों में से 1 घंटा आज हम सभी के लिए ही निकाले हैं। तो इस सेशन को जो है हम सभी लोग जो है केयरफुली, डिसिप्लिन वे में अटेंड करेंगे और सर के अनुभव को जो है आज जानने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस सेशन में। प्लीज सर। Thank you so much, and I'm humbled with your introduction. Thank you so much. थैंक यू सर। सर, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट अभी करने जा रहे हैं। उसके लिए जैसे हम पहले भी बताए सर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एपीएल परिवार की तरफ से कि आज आपने 1 घंटे का समय निकाला हम सभी के बीच में। और सर, आपको जानने से पहले जो है मैं, पूरी हमारी टीम, पूरे हमारे विद्यार्थी ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जो है सर कुछ बताएं। सर, प्लीज ब्रीफ योर प्रोफेशनल जर्नी, प्लीज सर। Thank you, and before I start, I want to congratulate the APLL management and all of you. ये easy journey नहीं है, especially during the lockdown में. Especially education sector went through such a tough time, and the kind of brilliant effort taken and the kind of change management आपने किया वो बहुत appreciable है, and I wish you all the best to you, and we really appreciate and we are very proud to be a partner with you all. To talk about my professional life, as you have already shared in the introduction, I started my career as a salesperson. Every field, be it accounts, be it HR, be it operation, every field has its own advantages, and marketing, sales also has its advantage. As a salesperson, I've learned a lot during my initial days. I used to sell products door to door to individuals and to the corporate houses for the first 5-6 years of my career. My first 6 years, I was a salesperson, and out of 6 years, first 2 years, I was into the field. The advantage of being in sales in your initial days is you learn how to manage your emotion. आप ये learn कर सकता, आपको emotion को कैसे manage कर सकता, आप ये भी learn कर सकता how to take defeat easily. Life में ना defeat को properly संभालना बहुत important है. There is a saying in French. When you succeed, you have to be careful with your ego. आपको ego को आप थोड़ा संभालना है, otherwise आप out of control हो सकता. When you fail, आपको complex हो सकता. You have to control your complex. ये दोनों चीजें बहुत important है. In sales, I remember when I started my career, I used to meet 5 to 6 people every day, morning to evening तक. My appointment लेकर ये लोगों को जाकर मिल, I used to sell financial them, like insurance or like many other financial products. I used to sell them. Whenever you go and meet, even with prayer appointment, the most toughest thing is आप predict नहीं कर सकता आपको क्या मिलेगा आपका कस्टमर के साथ. Whenever you go, see, yes or no sale or no sale वो दूसरा चीज है, but the way you get to your welcome, आपके पास अपॉइंटमेंट है, फिर भी ये लोग आपको half an hour, 1 hour, 2 hour वेट करने के लिए बोलेंगे. वेट करने के बाद भी वो बोलेंगे आज मैं बहुत बिजी हूँ, आपको नहीं मिल सकता. So
when you go in the morning, you go with all your energy, with all your positivity. When sometimes the kind of questions they ask, the way they treat you, you will learn how to be emotionally strong. The most important thing, if you look at my success ratio around 40%, iska matlab, if I meet 10 people, 4 people will say yes to me for my sales things. You will learn the no. Okay, the more the no you get up, जानता मैं yes के आसपास में हूँ. So you learn how to deal with no, and even more importantly, when you have a very bad sales call, sometimes your customer will shout at you. See, the problem with the salesperson, they are the face of the company. Anybody makes a mistake, even the back end people or customer, your call center people, anybody makes a mistake, everything comes on the salesperson side. Salesperson sabhi ko samalna hai, he represents the company, he has to be very, very careful. So after a tough sales call, आप इमीडिएटली दूसरा कस्टमर को जाने के लिए, मिलने के लिए जाना है, इसी समय में आपके पास होगा 5-10 मिनट तैयार करने के लिए. बट वॉट एवर द सेल्स कॉल, वॉट एवर द नेगेटिव इमोशंस, आप इसको पॉजिटिव करना है, जाना है. ये चीज हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय फर्स्ट 6 years. देन फ्रॉम सेल्स आई गॉट इनटू training the sales people. वो बहुत interesting journey है. Almost 8 years I was into training the sales people. So during that time I met a lot of sales, different types of sales managers. I helped a lot of top management people also in sales strategies. So that's how my first 14 years have gone, and last 6 years I'm with Smart Value, and the journey is very interesting, and I'm learning every day with every moment. थैंक यू सर, थैंक यू सर. जैसे सर आपने बिल्कुल इजी वे में आज हमारे विद्यार्थियों को अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आई होप कि हमारे सारे विद्यार्थी जो है, आई थिंक कि शायद इसी रोड मैप को जो है इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी भी लाइफ को जो है आगे जरूर बढ़ाना चाहेंगे. सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू डील विथ पीपल एज यू आर हैविंग सुपर्ब एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हैंडलिंग. तो प्लीज सर. Sandra, people handling is a big skill, and you keep learning every day. The beauty of people handling, see, if you take computer, and if I program, every time I switch on my computer should say, "Good morning, Krishna." And whether I switch on in the morning, whether I switch on in the afternoon, or in the night, it will say only "Good morning, Krishna." Whether I switch on in Delhi or Bangalore or in Calcutta, wherever I switch on my computer, it will say only "Good morning, Krishna." In any part of the world, in any part of the time, that won't change. But with people, they are not like machines. They are full of emotions. So it is very, you have to be very careful when you deal with people. If you want to be a successful manager or a successful leader, people management skill is very, very important, irrespective of your talent. If we ask a simple question like, who is the greatest batsman in cricket today? Is it Sachin Tendulkar or is it Saurav Ganguly? And when we talk about the cricketing skills, people will easily say Tendulkar, they put Tendulkar above Ganguly के ऊपर Tendulkar को डालेंगे क्योंकि technically Tendulkar बहुत strong है. But when it comes people management, that's where the captaincy gets into the picture. If you look at the captaincy, who is the successful captain? Is Ganguly. क्योंकि Ganguly knows how to handle. Ganguly एक जानता how to take best out of Virendra Sehwag. Ganguly knows how to take best out of Anil Kumble. He knows how to take best out of every player. वो बहुत important है people management. And as we said, computer will say only good morning. Whatever you program, it will only say. People, morning somebody will come and smile and hug me. Hi Krishna, kaise hai aap? Afternoon, the same person turn his face and go. अब ये मैं से क्या हुआ? क्योंकि people are full of emotions. So when you talk about people management, the most important part is emotional management. आप खुद का emotional को control करना है and आप others को emotional को जानना है. So to make my question my answer very simple, to package my answer, आपको minimum 4-5 skills अब develop करना है for people management के लिए. This is my experience. बहुत चीज है, but if you can develop 4-5 skills, if you can master, then people management थोड़ा आसानी होगा आपके लिए. One of the skill is listening skills.
It's a very, very important skill. Yes, sir. 90% of the problem will get solved by listening. आप सॉल्यूशन देने के लिए कोई जरूरत नहीं है. एक बंदा आपके पास आ रहा है, आप उनको लिसन करो, Yes, sir. ध्यान से लिसन करो, ऐसे ही लिसन करो. सी एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, और आप लाइफ में आगे बढ़ने के समय में आपको ये हो सकता है सेम थिंग पीपल आपके बार बार आकर सेम चीज बोलेंगे, तो आपको बोर होगा. इमीडिएटली आप क्या होगा, ओ मैं जानता, आप उनको कट करेंगे. वो मत करो, जस्ट लिसन, एंड बाय लिसनिंग 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व. I had a boss, even in my current company, I have a boss. He's our, I report to him. Trust me, every time I have a problem, I go to him. Every time I go to my boss, whether he has solution or not. The moment I go to him, he always says, "Oh, Krish, come. I think you're stressed. Don't worry. There is a solution for all problem. Kelly, there is a solution." But just he listens. He listens. By the time I tell whether he gives a solution or not, when you went out your feeling, you will feel. So the listening skills is very important. People management. Everybody wants to talk. Give their space. So listening is an art. How to listen? You have to listen as if you are listening first time. As if, say for example, your downline is coming with an idea. आप वो idea को बहुत जानता. Trust me, 99% of the idea आपके पास क्या आ रहा है, they have already implemented. The world में वो सभी repetitive है. ओके, वो नया चीज आने के लिए वो समवन, बट आपके लिए वो बहुत बार वो आइडिया को आपने जानता, बट फिर भी आप ऐसे लिसन करना है एज इफ यू आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स माय फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल मैनेजमेंट के लिए. एंड द सेकंड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो द पर्पस ऑफ एवरी इंडिविजुअल. उनका पर्पस क्या है, वो क्यों काम कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ पीपल. And the most another important skill you have to develop is whenever people आपके पास आने के समय में, you should be a source of solution. अब solution होना है, you should not create a problem. मैं जानता, when I was working in my previous company, मेरे पास एक मैनेजर था. Before I go, I know मैं एक प्रॉब्लम के साथ जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम को मिलने के लिए. मैं एक प्रॉब्लम के साथ जाए तो वो मैं वापस आएंगे with 3 प्रॉब्लम के साथ. So if you are not a source of solution, don't be a source of problem. That's very important. People management, when people come to you, they come with the hope. Okay, मैं जा रहा हूँ इनके पास, मुझे solution मिलेगा. Solution नहीं है तो एटलीस्ट कंफ्यूज करो. Okay, give a listening, वो अच्छा होगा. So managing emotion, managing people is a big part. So be a listening skills is very important. Listen and be a source of solution, and the most important is purpose को understand करो. And the last 2 points which I personally feel is very important. One is whenever you give feedback. So feedback sessions are very important. When you train people as a leader or when you deal with people, feedback देना बहुत important है. Feedback में 2 चीज होगा, एक positive feedback, एक negative feedback. Whenever positive feedback में appreciate करेंगे, ओ बहुत बढ़िया किया. When you appreciate from the heart, दिल से appreciate करो, दिल से. That's why in our meetings also we say give a good round of applause. दिल से appreciate करो. Whenever you give improvement feedback, वो बहुत important है. Improvement feedback, whenever you give improvement feedback, give wisely, carefully दीजिए, क्योंकि nobody likes negative feedbacks. Nobody likes. And आप सोच सकता है ये मेरा downline है ये, but that will hurt. When you hurt people, they will never come to you. People management is nothing but people should trust you and they should love you. Both are important. Trust is important, love is important. 2 अलग-अलग चीज है. मैं मेरा मैकेनिक को ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे डॉक्टर को ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं उनको लव नहीं कर रहा हूँ, प्यार नहीं कर रहा हूँ, कोई इमोशन कोई प्यार नहीं है विद द डॉक्टर, बट उनको ट्रस्ट कर रहा हूँ. बट पीपल मैनेजमेंट के लिए, लीडर होने के लिए वो ट्रस्ट एंड लव इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज लव? माय मदर लव्स मी. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज, माय मदर लव्स मी. Nobody can love like my mother. My mother इतना प्यार करता है मुझे, nobody ये दुनिया में इतना प्यार नहीं कर सकता. But मेरा मदर के पास ट्रस्ट नहीं है. Every time I come out college in those days, I'm talking about 94, 95 में, मैं कॉलेज से आने के बाद वो सर्च करेंगे सिगरेट है मेरे, because ट्रस्ट दूसरा चीज है, प्यार दूसरा चीज है. So ये दोनों को आप एक साथ रखना. पीपल मैनेजमेंट में people should trust you, people should love you. इसके लिए you need to listen them and you need to whenever you give feedback, give the 2 improvement feedback wisely देना है. If I say
Promote or Jitendra, you have to improve your communication, or you have to be more patient. Whenever I give, मेरे पास सभी reason होना है मैं क्यों ये feedback दे रहा हूँ आपको. If I don't give, just like that I give, the trust will go. So whenever you price from the heart, दिल से price करो, appreciate people, appreciate, at least appreciate one time. See, appreciation ना आपको people management skill को बदल देंगे. I don't know, when have you appreciated your mother last? Go and tell your mother, mother, आज खाना बहुत बढ़िया है. Trust me, she makes an offer. I mean, in positive sense, I'm telling. Please, because appreciation is very important. Whenever you appreciate, everything will be all right. So appreciate from the others and carefully you give your this thing. And last but not the least, the most important thing is your decision should not be influenced by your mood. मैं ये जानता, sometimes if people come to you, they should not ask your PA or somebody, आज सबका mood कैसे है? Whatever the mood, irrespective of, people should say, whatever my boss mood, bad, good, whatever it is, whatever my leader's mood, he will take the right decision. आपका decision logically होना है. It should not be influenced. He is close to me, मैं इसलिए उनको ये बोल रहा हूँ. Values, all your decisions should be value based. So listen carefully, improve your listening skills, and be a source of solution, not a source of problem. And understand करो every individual को purpose क्या है, वो क्यों काम कर रहा है. आप एक बार purpose को, some people work for money, some people work for izzat, some people work for fame. Understand करो. See, everybody will have everything, but what is most dominant? So वो आप deliver करो. People would love you. People would love to come to you. And whenever you criticize wisely. Appreciate from the heart. You appreciate and never allow your decision to get influenced by your mood. Whatever your mood, you should take a value. Once you can pack it, once you master these arts, trust me, people would love you. You look at any leader in any field, be it Mahatma Gandhi from social reformation, be it Christ or Buddha or from spiritual aspect, or be it some sportsman, be it Pele or Mahendra Singh Dhoni. You look at everybody. All these people have all these characters. So people management is an art. So once you master these 5 points, trust me, people would love you. Once you are people, the word is with you. थैंक यू सर, थैंक यू. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्त कि ये जो टॉपिक था पीपल हैंडलिंग का, ये हम सभी के काम में बहुत ज्यादा ये यूजफुल है. और आई होप कि आप सभी लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा और जरूर आप अपने वर्क में इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करिएगा, चाहे वो लिसनिंग है या आपकी इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल है या अप्रिसिएशन है. वो सारी चीजें जो हैं दोस्तों हम सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी जर्नी को जो है आगे बढ़ाएंगे. सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सर थर्ड स्टेप में हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि एज वी नो यू हैव ग्रेट हॉबी ऑफ बुक रीडिंग. हाउ यू डिफाइन योर दिस हॉबी एज एन स्पेशल मंत्र फॉर ग्रोइंग बिग. तो प्लीज सर ऑन दिस. Reading is a very very important habit. हम सभी ये हैबिट को डेवलप करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने के लिए. Books are very good friends. Whenever we talk about book, we should tell Socrates का last day था. Next day Socrates को king ने decide किया इनको we will cut his head. It was a last day. वो रात में वो jailer Socrates के पास गया, वो पूछा आपका last wish क्या है, आपका last क्या चाहिए. वो नॉर्मली वो समय में लोग पूछेंगे मुझे ये फूड चाहिए, मैं इसके साथ बात करना है. वो कुछ नहीं पूछा, वो बोला एक बुक का नाम, वो बोला मुझे ये किताब चाहिए. वो आदमी को बहुत ये क्या है, आई मीन कल यू आर गोइंग टू डाई, तुम मरेंगे कल, आज तुम बुक रीड करना है. हाँ रीड करना है, क्योंकि मैं थोड़ा वॉइस मरेंगे ना, मैं वो वॉइस बनकर मरेंगे ना. सो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We get a lot of advantages by reading. Whatever knowledge I have today, this I need to thank to a lot of people. They never taught me, but they taught me through books. Just to name few, बहुत list बहुत बड़ा है, but just to name 3 important things which I personally feel what reading can give you is knowledge is knowledge. आपके पास बहुत knowledge रहेगा.
आपको ये नहीं जान रहा व्हाट इज एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, आपको नॉलेज चाहिए तो लाइफ में आप स्ट्रगल नहीं करना है, यू नीड नॉट टू गो ऑन जॉइन इन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आप एक बुक किताब को लीजिए एंड रीड करो, यू कैन अंडरस्टैंड whatever knowledge you have, you can easily get by reading books, and most importantly books improves your vocabulary. Friends, life में आगे बढ़ने के लिए vocabulary is very, using the right word makes all the difference. Life में सभी difference, positive word use करना। See, I know somebody ना, you take a word like problem, बहुत problem है, very negative looks, but is there any other better word? Lot of people आज use कर रहा है challenge. I have a problem. कल मेरा एक presentation है, I have a problem, I have to prepare. Time नहीं है, मैं prepare करना है, ये एक problem है. Instead of saying I have a problem because I have to prepare for my presentation, एक तरीके से बोलना है। दूसरा चीज, मुझे एक challenge है, मैं prepare करना है मेरा presentation को. It looks better, but there is also better way to see. It's all about word. You can also say I have a situation to deal. भाई मेरा presentation को prepare करना है, एक situation to deal ना, ये challenge नहीं है, problem नहीं है। When you say I have a situation to deal, I have a problem, I have a challenge. I have a problem is very negative. I have a challenge is little positive. I have a situation to deal is more positive. Please understand, friends, that word, correct word, you will get by reading. बहुत नया शब्द लेने के लिए आपको मौका मिलेगा, and reading help you to improve your vocabulary. We can give a lot of examples. Say sometimes people tell me, Krish, I have hell a lot of opportunity. मैं पूछा, opportunity heaven होना है, hell is नर्क ना, क्यों opportunity नर्क होना है, वो heaven of opportunity होना है. When you read, you understand these things. You can improve your vocabulary. Sometimes people say, oh, deadly woman. Deadly, I mean, woman should be lovely ना, क्यों deadly होना है? It's all about the vocabulary. You can improve your vocabulary by reading, and more importantly, your food for thought. आपका imagination power को increase करेंगे। See, life में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत imagination, situational brilliance बोलेंगे अंग्रेजी में, आपको situational brilliance चाहिए। I remember I went to, somebody went for an interview. एक बंदा एक interview में गया, enter किया, but he has fallen. वो थोड़ा step नहीं देखा, वो गिर गया। वो इंटरव्यू पैनल में सभी हंसने के लिए शुरू किया। वो बहुत नेगेटिव, वो उठाया, वो बोला, सर, I have fallen, but I have fallen in the right company. मैं एक सही कंपनी में गिर गया, मैं बहुत खुश हूँ। Interview, how? By reading. When I read that, I used this in one of the interview. I got the job. And I read, बहुत चीज आप ऐसे बोल सकता। I read somewhere how to. I'm talking about how to attend an interview. As a lot of students are there, by reading you understand. You can understand the experience, the biography में बहुत लोग experience को understand करके उसी से आप learning के लिए। एक interview में, एक IAS interview में एक बंदा गया, ये पूछा, the interviewer ने पूछा, मैं आपको ये tough question पूछ सकता और आपको 10 easy question पूछ सकता, बोलिए आपको क्या चाहिए? ये बंदा ने सोचा, ये क्या इजी क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन का मतलब वो पैनल के लिए इजी हो सकता, मुझे टफ हो सकता ना, क्यों मैं रिस्क लेना है? मैं ये टफ क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सर एक टफ क्वेश्चन पूछिए एंड मुझे मेरा सेलेक्ट करो। द क्वेश्चन इज व्हिच वन कम्स फर्स्ट, चिकन और एग? फर्स्ट, यू नो द स्टोरी, व्हिच वन कम्स फर्स्ट, चिकन और एग? ये सोचा, सोचने के बाद बोला एग फर्स्ट आया। सर इंटरव्यूअर ने पूछा, कैसा? वो बोला, सर आपने बोला एक टफ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को मैं क्यों जवाब देना है? And he was selected. Trust me. So by reading, you will learn a lot of things. Reading gives you the vocabulary, reading gives you the knowledge, and reading gives you the thought process. It can expand your thought process. More you read, more you expand the thought process. You learn how different people behave in different situations. Life is experience. आप सभी एक्सपीरियंस, वो डिफरेंट सिचुएशन में ये बंदा क्या क्या कैसे सक्सेस हुआ, और ये अंडरस्टैंड किया था ना, आप इजीली वो सिचुएशन में रिपीट करके, यू नीड नॉट टू सी, लर्निंग इज व्हाट, फायर इज देयर, आग लग रहा है, आप आग को टच किया तो आपको बर्न होगा, सभी जानता। आप इधर टच करके जान सकता और बाय रीडिंग जान सकता, मैं आग को टच किया तो प्रॉब्लम हो।
So it is all about learning from others. So reading is very important. Please develop these skills. Lot of books are there. आप regional language में भी read कर सकता, English में भी read कर सकता, different topics are there. I would recommend, मैं आपको ये recommend करेंगे, please read a lot of autobiography. शुरू करो महात्मा जी का बुक से. My experiment with truth बहुत बढ़िया है. You will surprised how normal person, how an Atma became Mahatma. The journey को आप understand कर सकता. बहुत वो बुक है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में. Please read lot of autobiography and also keep reading. At least spend 15 days a day for reading. That will develop you. आज नहीं जानता, trust me friends. 10 साल 15 साल 20 साल के बाद your knowledge you will be knowledgeable. थैंक यू सर. जैसा कि रीडिंग बुक जो है इतना इम्पोर्टेंस है हम सभी के लिए, आज हम लोगों ने जाना. और दोस्तों हम सभी लोग जो है जरूर इन चीजों का इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे सर ने गाइड किया है. और थैंक यू सर इसके लिए. सर फिर नेक्स्ट स्टेप में सर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि वी सी यू एज सक्सेसफुल पर्सनालिटी बट स्टिल हम्बल. व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड? सर प्लीज ऑन दिस. This is a very simple thing. Success and failure now kind ka both side, it's the same, with two sides of the same coin. My father used to say, once I remember long back, when I was in school or something, मैंने एक दिन I bought some new pair of चप्पल्स, and then मैंने बोला ये अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा खरीदना है, because my friend I ये समय में he told something which really touched me. He said तुम जानता से नहीं, मैं नहीं कह सकता, I will not buy for you. क्यों? हमारा पास मनी है ना, सक्सेसफुल है ना, क्यों नहीं कह सकता? वो बोला सी तुम सोच रहे हो तुम्हारा पास मनी है तो सभी आ जाएंगे, इसे नहीं, कुछ नहीं आ जाएंगे. तुम्हारे लिए hundreds of people हर दिन काम कर रहा है. तुम एक शर्ट पहन रहा है, 10 लोग इस शर्ट को बनाने में काम कर रहा है. शर्ट के लिए आपको थ्रेड चाहिए, थ्रेड के लिए अग्री की खेती करना है, इसको फैक्ट्री में जाना है, फैक्ट्री में बहुत लोग काम कर रहा है, फिर इसको स्टिच करना है, somebody should sell for you, एक शॉप होना है, बहुत लोग आप आज खा रहा है, इसके लिए आप नहीं जानता कितना लोग काम कर रहा है. इसलिए ये चीज आप एक बार अंडरस्टैंड किया तो ना आपको ये समझ में आएंगे. We are nothing is in our hand. Let me tell you a small story. Whatever problem today we are facing, people are feeling bad. Might be, there was a time where I felt very big. I remember those times where whenever I go for a meeting, I wait. People will come and open the door. मैं अपने आप हो जाएंगे, wait करेंगे. Then मैं understand किया, people will open, but crane नहीं आएंगे ना मुझे उठाने के लिए. Please understand. The end of the day, it is your effort. That's why I always request people don't give any introduction to me, because when I talk to you, मेरा half an hour talk मुझे आपको introduce नहीं किया तो आप कितना बोलेंगे ना वो introduce नहीं करेंगे. So एक बार आपको ego को थोड़ा side रखो तो ना everything है. So we were talking about a story. एक दिन एक बर्ड एक मीट को, एक फूड को, मीट को देखा, मीट को लेकर फ्लाई करने के लिए शुरू किया. हंड्रेड्स ऑफ अदर बर्ड्स स्टार्टेड चेसिंग. वो ऊंचे जा रहा है, ये सभी उनको चेस कर रहा है, उनके पीछे जा रहा है. देन वो बर्ड ने सोचा क्यों मुझे इतना अदर फ्रेंड्स मुझे चेस कर रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, मीट पीस के लिए. वो मीट को ड्रॉप किया, वो नीचे गिरने के लिए शुरू किया. सभी अदर बर्ड्स वो मीट पीस के जाकर गया. दिस बर्ड वाज अलोन इन द स्काई, स्काई में अलोन था. ईगो इज लाइक दैट. आप ईगो को ड्रॉप करो, द एंटायर वर्ल्ड इज विथ यू. यू टेक ईगो, इवन योर फैमिली इज नॉट विथ यू. सो ग्राउंड होने के लिए एक ही चीज है, जस्ट ईगो को ड्रॉप करो. वी आर नथिंग, thousands of people are working. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. I am nothing without my team. एक बार अंडरस्टैंड किया तो हो जाएगा. थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल नॉलेज.
एंड सेकेंड स्टेप में सर हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे, वी बिलीव दैट यू हैव great love for Almighty. How it become an integral part of your journey, and what message you pass on to our youth on Supreme Power Connect. Please, sir. Now from corporate we are getting into spirituality. Friends, life is faith. हम 2 साल का प्लान कर रहा है, 5 साल का प्लान कर रहा है, इवन मैं सोच रहा हूँ मैं कल यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से यहाँ जाए, वो बहुत चीज प्लान कर रहा है। ये हम कर रहा है क्योंकि हम सोच रहा है हम कल जिंदा रहेंगे। फेथ, सो एवरीथिंग इज फेथ। फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज फेथ। आज दुनिया में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लोग फेथ को नहीं प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहा है। अंग्रेजी में बोलेंगे फेथ मूव्स माउंटेन एंड इट डज मूव। अब देखिए, आई वॉज देयर इन यूरोप मेनी इयर्स बैक। वहाँ एक ऐसी एक टॉक शो में लोग मुझे पूछा, कृष्णा तुम्हारा कंट्री में इंडिया में इतना भगवान है, पॉपुलेशन उतना भगवान है। एंड आई सेड हाँ, क्योंकि हम ये कॉन्फिडेंटली फील कर रहा हूं क्योंकि द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द ऑब्जेक्ट। द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यू रिप्लेस ऑब्जेक्ट को शिवा, विष्णु और गणेश और अल्लाह, जीसस। द पावर ऑफ गॉड इज नॉट इन द गॉड, इट इज द फेथ वी हैव टुवर्ड्स द गॉड। आई टोल्ड, सी हम लोग ने हमारा फेथ को एक पेड़ में रखा। हमने पूछा पेड़ बहुत पावरफुल है, ये पेड़ मुझे मदद करेंगे। वो पेड़ को भगवान समझकर हमारा फेथ को पेड़ के ऊपर रखकर हम पेड़ को वर्शिप करने के लिए शुरू किया। ये पेड़ भगवान हो गया, पेड़ मुझे काम करने के लिए शुरू किया। सब लोग समुद्र को देखा, वो बोला समुद्र भगवान है, वो समुद्र को वर्शिप करने के लिए फेथ को समुद्र में रखा, इसलिए समुद्र भगवान हो गया। somebody look at the mountain, वो तो माउंटेन भगवान है। See, it is not mountain, it is not samudra, it is not paid, or it is not stone, or it is not anything. It is the faith works, not any other thing. That's why for me Krishna, I say, oh, I go to Krishna temple, बहुत बढ़िया powerful है, मुझे सभी हो रहा है, बट मेरा फ्रेंड को नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा फेथ है ना, ये कृष्णा नहीं है, फेथ काम कर रहा है। फॉर समवन अल्लाह काम कर रहा है, फॉर समवन जीसस काम कर रहा है, फॉर समवन शिवा काम कर रहा है। ये शिवा और विष्णु ये बात ये नहीं है, ये फेथ। इन रामायण में यू ऑल नो लॉर्ड हनुमान जी को सभी वी ऑल नो। एक दिन हनुमान जी इतना बढ़िया सर्वेंट है राम जी के लिए, इतना बढ़िया सर्वेंट है, राम जी बैठने के समय में वो स्टैंड नहीं करेंगे। वो स्टैंड किया तो वो सोचेंगे मैं राम जी के, मेरा हाइट ऊपर है, बड़ा है, मैं नहीं स्टैंड करना है, इसलिए व्हेन राम जी इज सिटिंग ही सिट स्क्वाट करके बैठेंगे इनके नीचे। राम जी के सामने वो सर को नहीं उठाएंगे, ऑलवेज पुट डाउन हिज हेड एंड टॉक, सच अ पर्सन। एक बार राम जी को बोला हनुमान जी ने, राम जी मेरा फेथ आपको भी बहुत पावरफुल है, माई फेथ इज मोर पावरफुल देन यू। हमको कैसे हो सकता? देन वो बोला मैं राम राम बोलकर इंडिया से लंका फ्लाई किया, हवा में गया, अब ट्राई करो ना। ये मैं गया क्योंकि मेरा फेथ बहुत पावरफुल है। मैं राम एक पत्थर लेकर राम लेकर डाला, बिकॉज ऑफ माय फेथ वो फ्लोट किया। आप ट्राई करो, आप डूब जाएंगे। सो द फेथ इज very powerful. According to me, spirituality is nothing but faith. Have your faith, and please understand, and faith can be on anything. It can be at towards Allah, it can be towards Jesus, it may be towards Krishna or anybody. So the question is not the object, the question is of faith. But the moment we fail to understand, the moment that's why I say ye Bhagavan more powerful than nahi, Bhagavan ek hi hai. Okay, our faith works. So my simple message to all youngsters, have faith. The faith can be on your work. Somebody they call karma yogi, they sing my karma. You look at a person who's in the border, we have to really cross our hands, look at them, they know they may die at any time. When the bullet comes, they know
they may die, but still they go because they have faith that it is my. Otherwise, a cloth kya hai? Flag kya hai? Flag is a cloth, colored cloth, but the faith makes that flag. They are ready to give their life. So have faith. Anything you do, everything you do, have faith and unshakable faith. Once you have unshakable faith, spirituality is all about that faith and believe in that faith. Okay, don't fight. Let us not get into argument that this is powerful, that is powerful. Your faith is powerful. If your faith cannot make it, nothing can make it. If you are faithful, even God will not stop you. If you are not faithful, even Bhagavan आपको नहीं मदद कर सकता. राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू. एंड सर, अभी हम सभी लोग जैसा अभी जानते हैं कि आपके पास भी समय कम है, बट उसमें और एक दो क्वेश्चन हम लोग लेने का प्रयास करेंगे. और सर, अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू डिफाइन विजन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ विजन इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ. प्लीज सर, क्योंकि ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. प्लीज आप इस पे गाइड करें, प्लीज. See, vision is destination. सभी के पास, all successful people start the journey with a clear vision. आपको vision clear हुआ तो ना, आज और कल आप सक्सेस करेंगे. It may be professional vision, it may be personal vision. If you don't have a vision, आप क्या अचीव कर रहे हैं वो by default आ रहा है. So life में anything comes by default. आप इनका फायदा नहीं उठा सकता. Vision is our destination. Unless otherwise you know your destination, you cannot travel, you cannot go forward. Vision should be followed by a mission. Okay, values, ये चीज बहुत important है. See, सभी के पास vision हो सकता. आपका vision क्या है? See, when it comes vision, there are two chases. What is your vision? I want to buy a house. वो vision नहीं हो सकता according to me. I want to go abroad. वो विषय नहीं हो सकता. I remember, let me explain this with one small example. I don't know, ये अभी वो contest में नहीं है, but still, in South India में there was a very famous actor called Rajinikanth. बहुत बड़ा actor है. अभी वो politics में नहीं है, but वो politics में वो समय में आया तो you would have been a chief minister. इतना बड़ा fan following, इतना famous था उस समय में. But अब रजनीकांत को देखिए तो I don't know, you all know about him. He's a black thin man. एक समय में एक person went to Rajinikanth and asked, one journalist asked, "Sir, you don't have any six pack like Salman Khan." हाँ, six pack नहीं है, ये इतना पतला आदमी है. And you are not a great actor like Amitabh Bachchan. वो अमिताभ बच्चन ये act नहीं कर सकता. अब ये only style है. ऐसी किया तो वो रो रहा है. अब समझना है. Okay, not a good actor, हाँ. Not a very big actor, a very great actor. He's not very handsome. आप उनको देखिए तो ना, he's not handsome. Like Kamala Hassan or like Shah Rukh Khan, Salman Khan, they are very handsome. Hrithik Roshan, but he's not handsome. But still, he rules. Very powerful. People love him. What is the reason? Have you ever dreamt of it? Have you ever dreamt? You had any vision? You said, "नहीं, मैं never. मैं एक ही चीज ड्रीम किया. नहीं, एक ही चीज ड्रीम किया, मैं एक अच्छा सक्सेसफुल एक्टर बनना है. एक बार आई बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर, ऑल मनी, फेम, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फॉलो. सो आपका विजन ये होना है दैट आई शुड बी अ सक्सेसफुल डायमंड. आई शुड बी टू टॉक अबाउट इन आवर कॉन्टेस्ट, और आई शुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन. आई शुड बी अ सक्सेसफुल लीडर. एक बार वो लीडर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लीडर, एक बार once you became, trust me, money, house, foreign trips automatically आ जाएगा. Your vision should be becoming something, not getting something. Vision is not getting something. Vision is becoming something. Vision is helping people to become something. As a leader, once you say, I should create 100 leaders in my team, I should create 100 people to succeed in them. The moment you do that, life is yours. Vision should be not getting something or having something. Vision is becoming something or someone. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे आज हमारे विद्यार्थियों को, आज आप हमारी टीम को आज आपने गाइडेंस किया. और हम आपसे सर यही बोलेंगे कि
हम सभी लोग आपके सारे पॉइंट्स के सहारे ही अपनी जर्नी को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में सर, सेशन क्लोज करने से पहले बस एक लास्ट चीज कि सर कोई मैसेज अगर आप हमारे विद्यार्थियों को देना चाहें कि वो अपने कैरियर और गोल को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से अपने जो है ड्रीम के और नजदीक पहुंचे, प्लीज सर। फ्रेंड्स, एक ही मैसेज है, स्टे पॉजिटिव। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक ही गोल है, वो बोलेंगे गोल ऑफ एवरी गोल इज टू बी हैप्पी। ओके, आप क्या कर रहा है, आप क्या सोच रहा है, आपको कुछ देना है, आपको कुछ नहीं मिला तो वो चीज मत करो। Let me finish, let me take 2 minutes and explain this point, very important। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुश होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पीस होने के लिए आपके पास एक ब्रेन है। ब्रेन इज एवरीथिंग। ब्रेन में 8 parts है। 1/7 is conscious brain, 7/8 is unconscious। It is like a ship। आप I don't know, अभी बहुत टेक्नोलॉजी है मैरीन मैनेजमेंट, मैरीन इंजीनियरिंग में, बट आई एम टॉकिंग 20 years back। शिप को एक कैप्टन, अभी भी कैप्टन है, बट वो समय में ना कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन इज द वन हु सिट्स इन द डेस्क, आई मीन शिप डेक, डेक में बैठकर वो देख सकता सामने क्या। शिप इतना बड़ा है, शिप एक मूविंग आइलैंड है, बहुत बड़ा है। वो ऊपर डेक में बैठकर वो देखेंगे आगे क्या है, कैसे जाना है। बट वो मरीन इंजीनियर, ड्राइवर ना, एक ड्राइवर नहीं, शिप के लिए 40-50 ड्राइवर होगा, वो हम बोलेंगे मरीन इंजीनियर। वो लोग डिसाइड करेंगे वेदर द शिप हैज टू गो फास्ट। वो लोग को वो बॉटम पार्ट में होगा, शिप का बॉटम पार्ट में, वो नहीं देख सकता आगे क्या है। ये सभी लोग कैप्टन क्या बोल रहा है इनका इंस्ट्रक्शन में करेंगे। इफ कैप्टन लुक्स एंड सेज ओके देयर इज अ आइसबर्ग इज देयर, देयर इज अ आइसबर्ग, सो हमने इमीडिएटली राइट में टर्न करना है, वो बोलेंगे माइक में राइट में टर्न करो। वो सभी लोग बिना जानकर वो राइट में टर्न करेंगे। अभी गो फास्ट, दे विल गो फास्ट। अभी गो स्लो, दे विल गो स्लो। वो कुछ नहीं जानता कैप्टन क्या बोल रहा है। कैप्टन गलत बोले तो शिप अब जानता क्या हुआ टाइटैनिक को। सभी कैप्टन के हाथ में है। हमारा कॉन्शियस माइंड इज कैप्टन। 1/8 में एक पार्ट ये कॉन्शियस माइंड, 7 लोग है ना, 7/8 इज सबकॉन्शियस। वो सबकॉन्शियस को नहीं जानता। सो ये प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन किया तो देन ओनली थिंग्स गोस प्रॉपरली। वो कैसे होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। एक ही चीज करो, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए एक ही चीज करना है, सेल्फ अफर्मेशन पॉजिटिव। आपका खुद का बात, दे कॉल इट सेल्फ टॉक अंग्रेजी में। एवरी टाइम यू टॉक टू यू, पॉजिटिवली टॉक। एनीथिंग यू टॉक नेगेटिव, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन जाएंगे। ये लोग को नहीं जानता क्या है, वो जस्ट इफ यू से ये बहुत बकवास आदमी है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को जाना, ओके बकवास को आप पसंद कर रहा है, आपको बकवास ही आ जाएगा। सो प्लीज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए एवरी टाइम यू टॉक अबाउट ओनली पॉजिटिव थिंग्स। एनीथिंग पॉजिटिव टॉक, कीप टॉकिंग। एनीथिंग नेगेटिव, एक शब्द इज इनफ। हेडेक हो रहा है, नेगेटिव चीज है, जस्ट बोलिए हेडेक हो रहा है। आई रिमेंबर I asked a person, you have headache? आपको हेडेक है? मुझे ऐसी एक्सप्लेन किया, मुझे हेडेक आ गया। मैंने सोचा क्यों पूछा है इनको। नेगेटिव चीज को हेडेक है, हाँ, एनीथिंग गुड। इफ यू लाइक दिस टॉक शो, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं चाहिए, बट आपके लिए एनीथिंग गुड, एनी गुड फूड, एनी गुड टॉक, गुड। आप कॉन्शियसली अच्छी चीज को आप अप्रिशिएट करने के लिए शुरू किया तो सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप समझाएंगे। आप अच्छा चीज को समझ रहा है, आपको ओनली अच्छा चीज मिलेगा। दिस इज साइंस, दिस इज स्पिरिचुअलिटी एंड दिस इज प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। If you are positive, you will only get positive, you will come up in life. My only message, stay positive and make sure that you always आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना है, सेल्फ अफर्मेशन पॉजिटिव होना है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आपने इतने कम समयों में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें आज आप हमारे विद्यार्थियों को, हमारी टीम को आज आपने बताई। हम सभी को सर बहुत अच्छा लगा। समय कम है, अगर समय और रहता तो और भी हम लोग बात करते सर। और आपका धन्यवाद करते हुए सर हम इतना ही बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर भी जब आपके पास जब समय होगा तो फिर हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे और फिर से एक बार आपसे गाइडेंस लेने का प्रयास करेंगे। आज के आपके समय के लिए, आपके सेशन के लिए सर बहुत बहुत पूरे परिवार, एपीएलएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है
आप सभी लोगों ने नोट डाउन जरूर किया होगा। आप इन सारे पॉइंट्स को आप सहारे आप आगे जरूर बढ़ेंगे। और अगर दोबारा इस सेशन को अगर आपको रिव्यू करना होगा, सुनना होगा दोस्त, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहां पे ये सेशन अपलोडेड आपको मिलेगा, वहां से दोबारा आप इस सेशन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज पे जरूर जाएं, वहां से इस सेशन पे अपना लाइक कमेंट करना ना भूले दोस्त, क्योंकि जो चीज आप अपना फीडबैक डालेंगे उसी फीडबैक के बिहाफ पे नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे हम लोग मिलेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एपीएलएल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वीक में 2 टाइम्स एवरी वेडनेसडे और सैटरडे इसी तरह के सक्सेस टॉक सेशन के थ्रू एक ग्रेट पर्सनालिटी के थ्रू हम आप लोग आपसे हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय निकाला और फिर हम लोग जो है सैटरडे को एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। अब मैं अपने टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सेशन को जो है क्लोज किया जाए। थैंक यू सो मच।